and welcome to Vantage Holding presents Game On है. मैं हूँ रोहान अदीम. We are back after the match. The matches rather उनके ऊपर भी बात करेंगे अभी. But over here with our expert panel, we are ready to try and make sense of whatever game we were able to see from Barbados. But of course, on the other end, in Dallas, we had a full game. What a fantastic game that was between Nepal and Netherlands. We will talk about we have talked about the promise of associate teams so much already in the last 3 days. हम मज़ीद भी उस पे बात करेंगे, लेकिन a bit unfortunate, especially for all the England fans who were hoping to see, you know, somewhat of a good game. हमने काफ़ी इंतज़ार किया कि बारिश रुके थमे, लेकिन वही है कि up and down चलता रहा throughout. We kept waiting for an update, but unfortunately the showers were not just passing showers. They were pretty strong showers. The outfield was just pretty wet, and at the end of the day, a match couldn't be completed. We saw Scotland put out an effort. We will talk about that. We will watch some of the highlights as well. But as for now, it was Nepal and Netherlands who showed a lot of promise once again, and Netherlands with an easy and a smooth win. But nonetheless, what a crowd that was for Nepal. उस सब के ऊपर भी बात करेंगे. I've got with me my wonderful co-host Erin Holland. Erin, hi, how are you? How have you been keeping up with all of this? Oh, I think it was pretty devastating, to say the least. It was proving to be a wonderful match between England and Scotland. The first time they ever met, Scotland were off to a wonderful start, and I think we're all a little disappointed that we didn't get to see at least a 10-over-a-side game or even a 5-over-a-side game. I think Scotland were absolutely in with a chance to try and unsettle the defending champions. So it is a real shame that Mother Nature didn't come to play ball, but what we saw in Dallas just gave so much heart to how this game is growing. And if I'm the ICC, I'm honing in on what I not only saw in the crowd, the packed out, jam-packed crowd full of atmosphere with all those Nepalese supporters, but there's a photo going viral on social media that has tens of thousands of Nepalese fans all gathered around in the dead of night watching a big screen and cheering their heroes on. So to me, that was the real winner for today, seeing the heart and the support of our wonderful game of cricket for all the Nepalese fans. All blue in Dallas, and the whole ground was blue, and then some of the grass that presented a really beautiful visual of greens and blues. But in the end, what matters is that they all showed up to support their team. We've got our guests here who are ready to unpack both the games. Somewhat I've got with me Martin Guptill, Yunus Khan and Mohammad Hafiz. Guys, welcome back to Vantage Holding presents Game On Hai. Martin, where do we start? I mean, let's start with the Nepal game. We saw a lot of promise from their batters. We've seen what they can do, but today they were all out for 106. What a great bowling effort from Netherlands. Yeah, it certainly was, and you know, there was a Kiwi connection there with Tim Pringle and Logan van Beek. You know, 3 wickets apiece each. Tim Pringle ending up with man of the match, but you know, he's done it for his home side back home, Northern Districts, opening the bowling, you know, making it difficult for the batsmen to score, and you know, taking 2 wickets in the front 6 overs there, and then getting the set batsman, their captain Rohit Paudel, out later. You know, just proved how much he's come along in the last couple of years since making his debut for the Netherlands. And then Logan van Beek, you know, I spoke about him before the show, and the consistency and how he's gone in the last couple of years. His beautiful outswing bowling, getting a bit of shape and a little bit of shape, bit of bounce and bit of movement off the wicket as well. And you know, he only went for 18 off his 3.2 overs, so you know, he had it on a bit of a string. And then obviously Paul van Meekeren as well, 2 for 19, phenomenal effort, and Bastelater as well, 2 for 22 off 4. It was just an all-round effort, bowling in partnerships, making it difficult for the Nepalese batters to get away, and you know, ended up defending, bowling them out for a very gettable total. Yeah, but when we take a little look at what the Nepalese did manage to front up with today, yes, they're without their frontline international player in Sandeep Lambachani, but they played with so much heart, and they truly, Hafiz, actually gave the Netherlands a little bit of a scare there. There was at one point there when unfortunately the captain dropped Max O'Dowd, who was the bulk run scorer and got the job done in the end for the Netherlands, but they really pushed them to the brink considering the mediocre total. Were you impressed with what they managed to put out today in Dallas? Well, first of all, the crowd response was great. It was heartening to see, like, everyone was just backing Nepal at the moment. Like, the ground was full with the Nepal supporters.
It looks like they were playing in Kathmandu, not playing in the other. So I think there's something like we need to respect that, like the fan following, no matter which team you are playing for, everyone is everywhere and helping you out in that way. So basically they were not 11, they were more than 11. They were more than a 12th man, wasn't it? They had about 12,000 of them. But I think it's a very good effort because the conditions were tough. The ball was doing a lot with the new ball, and also it kept going with the older ball too. So I think it was a really good effort with the bat, as Martin mentioned, like the main players got out earlier. Pringle bowled really well. Then after, I think it was a lovely crafty innings from the captain Paudel. I think he did very well, because that time someone has to take that responsibility to be there at the end. And I think at the end, like you can say the strike rate is not good, but that really given them a momentum, a kind of a innings that team required to reach somewhere where they can challenge. So I think at the end 106 was good score for them. But I think Netherlands is much better team. That's the reason they brought that winning into their pocket, because I think at certain stage I was thinking if they were not having that much experience playing international cricket, it can go anywhere. But it's a good show for the Netherlands team. And Netherlands have, they have experience of playing against quality sides at high quality, high pressure stages. इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि वो बड़ी टीम्स को ना सिर्फ खेले हैं, बल्कि उन्होंने बड़ी टीम्स को हराया हुआ है. उन्होंने इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स तो साउथ अफ्रीका को भी हरा चुके हैं वो बड़े स्टेजेस पे. तो आई थिंक ऑन द ग्राउंड हमने मैच से पहले भी बात की थी कि दोनों टीम्स तकरीबन इक्वल लग रही हैं, हेड टू हेड भी सेम था, बट जहां पे नेदरलैंड्स को एज हुआ वो वही वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस, वही हाई प्रेशर गेम्स का एक्सपीरियंस. हाउ मच डज दैट इफेक्ट अ टीम ऑन अ गिवन डे? बिल्कुल ये मैटर करता है. उसकी वजह ये कि जब आप बार बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और अच्छे स्टेज पे खेलते हो तो वो फिर परफॉर्मेंस आपको नज़र आ जाए, और फिर आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपको अच्छा करना है. और फिर जब जहाँ प्रेशर की बात करते हैं, एग्जैक्टली यही हुआ. जब नेपाल उस शेप में आई, उस फेज़ में आई, तो वो कोलैप्स कर गई. और जब नेदरलैंड की बारी आई तो वो वहाँ पे अपने आप को, अपने नर्व्स को होल्ड किया, और उन्होंने वो जो एक हम बात करते हैं लाइन को पार करना होता है, तो ये लाइन पार आप तब करते हो, ये विनिंग तब करते हैं जब बार बार आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो. तो मेरे ख्याल से नेदरलैंड को ये थोड़ा सा एज है इस वक्त, और हमने देखा पास में भी कि जब कोई अच्छी टीम उनके खिलाफ आती है तो वो अच्छा परफॉर्म करती है. तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है. और उसके बाद उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, तो उनके पास हम हमेशा बात करते हैं ना कि एक आधा प्लेयर नहीं है, वो चिप इन करते हैं. तो जब बिग इवेंट्स आते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा होता है कि जब आपके पास 2 से 3 ऐसे की प्लेयर्स हों और मैच विनर्स हों, तो वो आपको परफॉर्म करके देते हैं. तो मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है. जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि यूएसए के लिए अच्छा है, एसोसिएट टीम्स के लिए अच्छा है, फैंस के लिए अच्छा है. और हमने देखा कि जो आज फैन थे वहाँ पे, दो के थोड़े से बारिश की वजह से हम चाह रहे थे कि 150 तक रन्स होते तो और अच्छा एक मैच होता, लेकिन क्योंकि बारिश वहाँ हुई और पिच जो जैसे इससे पहले मैचेस में खेल रही थी वैसा नहीं रहा, लेकिन अच्छा मैच हुआ है. और मेरे ख्याल से क्राउड के लिए अच्छा है कि जब क्राउड इन्वॉल्व होती है, और ख़ास तौर पर T20 में क्राउड इन्वॉल्व होगी, क्रिकेट में इन्वॉल्व होगी, और इस तरह के इवेंट्स होंगे और ऐसे कंट्रीज़ में होंगे, तो मेरे ख्याल से ये हमारी विन है, क्रिकेट की विन है. बिल्कुल. और बड़ा कम ऐसे मौके होते हैं कि जो ऑपोजिशन टीम के प्लेयर्स हैं वो रिकग्नाइज करें कि भाई उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा. आई थिंक उनके जो बॉलर है, जिन्होंने बाद में इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने भी ये बात की कि देयर वाज जस्ट सो मच सपोर्ट फॉर नेपाल व्हिच वाज ग्रेट टू सी, बट जब भी नेदरलैंड्स की बाउंड्री लगती थी तो खामोशी होती थी ग्राउंड में, व्हिच वाज जस्ट सो फिनोमिनल टू सी. बट आई थिंक एरन इट्स टाइम वी टेक अ लिटिल recap and see what actually went on in this match, and a promising match this was. Netherlands won the toss and of course they chose to bowl first, and this is what happened next. Yeah, Nepal, well, they dug deep, but in the end they could only manage 106 on the board. Paudel up the top there, the captain, leading from the front, 35. He fought hard off 37 balls. A little bit of support as well from Karan Gulshan and Saab, but truly 106 was just not going to be enough in those conditions today, and that was because the bowling of the Netherlands was absolutely on point, bowling them out in 19.2 overs. Van Beek, pick of the bowlers, 3 for 18 off almost 4 overs for him. Pringle 3 for 20, as we saw there, fantastic with the ball, with his spin. Van Meeken and De Leyder, an all-round effort as we're so used to seeing from the Netherlands team, and in reply,
Well, 109 for 4, they managed to chase it down. O'Dowd top scoring with a fine 54 off 48 balls there. And the Nepalese bowlers they put in a valiant effort to keep it and take it to the 19th over. But in the end, the Netherlands, a comfortable win by 6 wickets, Roha. What a performance this was from Netherlands. What a way to start their World Cup. Bowling के ऊपर भी हम अभी आएंगे, but बैटिंग के ऊपर भी काफ़ी एरियाज नेपाल के लिए उन्होंने मुश्किल बनाए उनकी बॉलिंग ने. But let's not forget that Logan Van Beek was phenomenal. You know, that spell, if we can take a look at it as well, and we can have Hafiz sort of give us his analysis on what went there. एक होता है कि आप अच्छी बॉलिंग करें और एक होता है कि आपको जब पूरी टीम फील्ड में सपोर्ट करे. हफीज, उससे कितना फर्क पड़ता है, बिकॉज 7 out of those 10 wickets were catches, so they were not putting down anything. Netherlands, they were just all over the park. देखिए, फील्डिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी टीम के जीत और हार के अंदर. जो थोड़ा सा फ़र्क आता है वो फील्डिंग एफर्ट से आता है. तो आप देखिए, ये हॉलैंड की टीम जब से आई है, इनकी फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स हाई हैं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इनको ये दाद देनी पड़ेगी कि इनकी को बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है क्रिकेट खेलने की, लेकिन ये जब इनकी जो क्रिकेटर आ रहे हैं वो फिट भी हैं और उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं. और अभी भी इस मैच में अगर आप बात कर रहे हैं कि उनके जो कैचेस जो वो होल्ड कर रहे हैं उसमें राइट टेक्निक है. अगर आप देखें कि अगर आप दूसरे एंड पे जाएं, नेपाल की टीम का एक लास्ट पे एक कैच था जो उनके कप्तान से छूटा मिड ऑफ साइड के ऊपर, तो अगर वो कैच पकड़ते तो शायद, हम ये नहीं कह रहे कि जीत जाते, लेकिन शायद थोड़ा सा और लंबा मैच चला जाता, थोड़ा और एक्साइटमेंट आ जाती. तो कैचेस या फील्डिंग हमेशा आपको किसी भी फॉर्मेट के अंदर वो एक एक्स्ट्रा एज देती है. तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है खेल का जिसके ऊपर जो टीम अपनी लुक आफ्टर करती है, इवन अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी फील्डिंग एफर्ट होता है. right. तो वहाँ से वो कुछ कैचेज ऐसे पकड़ते हैं, कुछ रन आउट्स ऐसे करते हैं, कुछ 20 से 25 रन सेव कर देते हैं. तो वो एक्स्ट्रा आपके पॉकेट के अंदर जा रहा होता है, आपके बॉक्स में गिर रहा होता है. तो मुझे लगता है कि ये कोई भी टीम हो, चाहे हॉलैंड या नीदरलैंड की टीम हो या किसी भी और जगह की आप टीम को आप देख लें, हार और जीत में बैटिंग और बॉलिंग से ज्यादा आपकी फील्डिंग एफर्ट जो है वो फर्क डालती है. और ये आइडेंटिफाई करना इन द फर्स्ट प्लेस कि ये एक एरिया है जहाँ पे हमें वर्क करना है. लोगन वैन बीक शायद इंटरव्यू में अपने कह भी रहे थे कि हमने यहीं पे कुछ अरसा पहले सिर्फ कैचिंग की प्रैक्टिस की है, बिकॉज वी न्यू कि वो एरिया हमने इम्प्रूव करना है और आज उसका रिजल्ट भी नजर आया. बट स्पीकिंग ऑफ वैन बीक, 3 for 18, what a spell from him. जब आपके पास स्पेस होती है और आप एरिया नहीं देते हो और थोड़ी सी हेल्प आपको पिच से भी मिल जाए, तो आपको और क्या चाहिए. तो मेरे ख्याल से यही वो हम बात करते हैं कि आपके वैगन व्हील्स ऐसे होने चाहिए जो कि ऑन स्पॉट हों. और मुझे लगेगा कि आज जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है वो बिल्कुल वहाँ नज़र आया. आपको स्टंप को हिट करना है और फिर हम बात करते हैं कि वेरिएशंस जब आपके पास होती हैं, तो वेरिएशन जैसे हम बार बार बात करते हैं, वेरिएशन सिर्फ ये नहीं कि आप स्लो बॉल कर दें, वेरिएशन नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल कर दें, बल्कि वेरिएशन ये होती है कि आपने जो मखसूस बैटर है उसके खिलाफ क्या बॉलिंग करनी है, किस पेस से करनी है. और यही वो एडॉप्टेशन है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एडॉप्टेशन करनी है. और जो इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट एडॉप्टेशन. और ख़ास तौर पे जब आप ऐसे ग्राउंड्स पे खेल रहे हो, ऐसी पिचेस पे खेल रहे हो जिनका आपको पता नहीं हो, तो आपने क्विक स्विच ऑन करना है और फिर आपने डिलीवर करना है. तो जिस तरह यहाँ पे नीदरलैंड क्विक उन्होंने रिस्पांस दिया और जो उनके बॉलर ने रिस्पांस दिया, फिर उनके फील्डर ने रिस्पांस किया. और जो हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फील्डिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब छोटे ग्राउंड्स होते हैं, छोटी बाउंड्रीज होती हैं और नए ग्राउंड होते हैं, तो वहाँ भी आपको एडजस्टमेंट करनी होती है. तो जब हम बात करें ना एडॉप्टेशन की, तो यही वो एडॉप्टेशन है कि आप कलेक्टिव एडॉप्टेशन करो एज अ टीम. हम जो बार बार कुछ टीमों की बात करते हैं, तो यही वो बात है कि अगर एक रन आउट, एक अच्छा कैच आपको अच्छी टीम के खिलाफ जब ये करेंगे, तो ये बिल्कुल चेंज जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में आएगा. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इनकी पूरी बॉलिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया वो किया है प्रिंगल ने. जो लाइन और लेंथ पे उन्होंने बॉल किया है, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि वो वाहिद स्पिनर थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया गेम को बाकियों के इर्द गिर्द, वो बड़ा शानदार था. कि सम टाइम आप ऐसी बॉलिंग फ्रेंडली जहाँ पे सीम हो रहा हो, एज ए स्पिनर आपको लगता है कि शायद अगर मेरा बॉल ब्रेक नहीं होगा तो मैं अच्छी बॉल नहीं कर सकता. तो अच्छा बॉलर होने के लिए, अच्छा स्पिनर होने के लिए ब्रेक का होना ज़रूरी नहीं है. आपकी वेरिएशन, आपकी गेम अंडरस्टैंडिंग, आपका राइट कंट्रोल, वो आपको हमेशा एडवांटेज देता है.
तो आज टिम प्रिंगल की बॉलिंग ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया. They weren't just beating them by pace, they were also deceiving them by spin, and Tim Pringle was the one to do it. Yeah, his slow left arm orthodox was really tricky to contend with on these particular conditions today. And throughout his spell, and 3 for 20 off 4 overs is a great effort in a World Cup game. His first first game in a World Cup, and he gets man of the match. How cool is that? And Martin, when I was watching him, it reminds me Daniel Vittori, and I was like, this guy is a little bit of Daniel Vittori. Now I came to know That's why it is. Makes sense, right? The That's Kiwi why. connection. But how about the cries of the elation of getting the wickets as well? I loved hearing that. He was so vocal. He was so excited. This is such a huge stage, and he seems to be absolutely relishing the opportunity, which is so exciting to see. Yeah, absolutely. His dad played in the '92 World Cup for New Zealand, so the father and son playing in a couple of different World Cups is pretty special for their family. And I'm sure Chris, if he's not there, he'll be watching back home and supporting him as his son play for the Netherlands. It's the iconic glasses too, isn't it, that makes you think of Vittori? Not really. The body language, the way he was bowling and then holding himself. Cute. I was like, he's a a little powder, bit of copying. powder coffee or copy Yeah, of he was a little bit of copying Daniel Vittori. Yeah. So it, Also plays Mitchell Satner plays for the same team as well, so Okay. we've got a couple of pretty good left arm Left-arm spinners to spinners, learn yeah, off in that association. So we have a good mentors, front of him. Absolutely, yeah. And one more thing we have to mention that when the fast bowling, ball well, sometimes batters go after the spinners, and then they took the wicket. They create chances. So, yeah, they create the chances. So I think that is the key point for these kind of bowling attack. And you keep saying how important it is to have a spinner. Like these middle overs are where these games are going to be won and lost in these conditions at this particular World Cup. To know that they have him, and what a wonderful option he was. In the Netherlands, we know they're already dangerous as an associate nation, and we look at their pool, and if I'm Bangladesh, I'm being a little bit worried now that I've seen what the Netherlands have thrown up today, Hafiz. It's if not these an easy condition, pool. if the pitch will be offered similar kind of assistance to the bowler, to the seamer, then definitely Netherlands can beat any team. I'm telling you, because they got the right bowling attack according to the situation and the conditions provided today. If that condition will be repeated somewhere, then they will be a very dangerous team. Let's hope we're not at a situation where the whole country is They are not playing with Pakistan, I'm telling you. where the whole country is praying Don't worry for about Netherlands to beat somebody just so that we could get through. I hope it doesn't come to that. Netherlands, we wish you success on your own merit and regardless of what Pakistan is doing in the World Cup. But we all bleed green here unless Australia is playing, let's be honest. We're off to a very short break here though. Advantage Holding presents Game On. Hey, we're going to unpack what happened in our first match of the evening here on Pakistan time. Of course, it was a washout between England and Scotland, but plenty to talk about there. We'll see you on the other side. जी वेलकम बैक टू एडवांटेज होल्डिंग प्रेजेंट्स गेम ऑन है, जिसमें गेम ऑन है. काफ़ी देर तक हम होप करते रहे कि हो जाए लेकिन एंड में हो नहीं सकी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वाले मैच में. उसके ऊपर अभी मजीद भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट हैपेंड बिटवीन नेदरलैंड्स एंड नेपाल. वी टॉक्ड अबाउट द नेदरलैंड्स बॉलिंग एंड फील्डिंग एफर्ट. बहुत ज़बरदस्त खेले लेकिन क्राउड का बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहा उनको आज के मैच में. द क्राउड वाज ओनली देयर फॉर नेपाल. डिस्पाइट एवरीथिंग हफीज़, नेपाल शोड अ लिटिल बिट प्रॉमिस. लेकिन अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें, पहले हमने उनकी बॉलिंग की तारीफ की, उनका वैन बीक का जो स्पेल था, फिर टिम प्रिंगल ने जैसे बॉलिंग की, कैचिंग कितनी स्पेक्टेकुलर रही. अब जब आप बैटिंग के लिए आते हैं, व्हेन यू नो कि टारगेट इतना ज़्यादा नहीं है, रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज़्यादा नहीं है, बट व्हेन यू कम इन अ वर्ल्ड कप मैच टू चेज एंड यू जस्ट लॉस्ट योर पार्टनर ऑन द अदर एंड, कैसा माइंडसेट होता है ओपनर का? बिकॉज मैक्स ओडाउड ने फिर बड़ा अच्छे से लेके चले अपने इनिंग्स को, 50 भी किया. नहीं, मैक्स ओडाउड की जितनी तारीफ कीजिए कम है. ये काफ़ी देर से खेल रहे हैं, हमने इनको 50 ओवर में भी खेलते देखा. जब ये वहाँ पे आए T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पे भी अच्छी क्रिकेट खेल के आए.
तो एक उनके सीजनल प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी ऐसी इनिंग्स है कि जो अगर आप स्ट्राइक रेट की तरफ लेके जाएंगे तो शायद आपको बहुत शानदार ना लगे, लेकिन क्योंकि विनिंग कॉज की रीज़न ये थी कि अगर ये वाली इनिंग्स वो ना खेलते तो इन कंडीशन के अंदर शायद नीदरलैंड को मुश्किल आती। मुझे लगता है कि एक ऐसी इनिंग्स थी जिसपे उनको खुशी होनी चाहिए, उनको प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने एक ऐसे मैच में जो किसी भी तरफ जा सकता था, मैंने कंट्रोल किया, मैंने सिचुएशन अच्छी हैंडल की और अपनी टीम को मैच जितवाया। और अगर वो आउट हो जाते, इफ दे हैड लॉस्ट दैट विकेट ऑफ मैक्स ओडाउड नीचे, मतलब वी ऑल सॉ नेदरलैंड्स के कुछ प्रॉब्लम्स रहे थे। विक्रमजीत सिंह एक बड़े प्रॉमिसिंग बैटर है, लेकिन उनका एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम फुटवर्क का रहा लास्ट वर्ल्ड कप में भी। एलबीडब्ल्यू आज भी वो सेम वे में डिसमिस हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ऊपर से आउट हो गए बैटर्स तो नीचे वाले बैटर्स क्या देखें। इनकी टीम में हमने देखा है कि प्रॉमिस है बैटिंग का। अगर हम देखें तो जो सी ब्रांड है वो जब आउट हो गए हैं उनके बाद वो एक अच्छे प्लेयर हैं, उनकी अच्छी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से मूव हुए हैं और बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। स्कॉट एडवर्ड इनके जो विकेट कीपर हैं और कैप्टन भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्सें खेली हुई हैं। अगर आप नीचे जाएं तो बास डी लीडे जो अभी बाद में आए हैं वो भी एक अच्छे मिडिल ऑर्डर हैं और बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसके बाद जो इनके लोगान वैन बीक हैं, ये बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। तो बैटिंग की डेप्थ इनके पास मौजूद है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर लो मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने वाले लोग हैं तो ओपनर या जो टॉप ऑर्डर हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की मैक्स ओडाउड ने वो शानदार है कि उन्होंने अपनी टीम के लिए वो जो डंकी वर्क की हम बात करते हैं कि सम टाइम आपको मुश्किल कंडीशन के अंदर या मुश्किल हालात को मैनेज करना होता है, वो उन्होंने करके दिखाया और मेक श्योर किया कि वो मैच को फिनिश करके जाएं। Just talking about the batting depth that Netherlands have, and of course Max Odoud played a great innings, remained not out as well, but we couldn't say the same for the Nepalese batters. Yeah, unfortunately they were bowled out in the 20th over, and it all started with the loss of Asif Sheikh to Tim Pringle, who was our player of the match. Garp, I might get you to run us through these wickets as they fell today. Netherlands, they all banded together beautifully, the bowlers. It was a comprehensive performance from all of them, and you know, as I said, they lost some couple of quick wickets in the power play, and they were kind of chasing their tails throughout the rest of the innings. Yeah, they certainly did, and Tim Pringle did a great job up the top there, and they just managed to take wickets throughout the innings. The Netherlands bowlers and the Nepalese just couldn't quite get any meaningful partnerships together. Good from him bowling at the death as well. The tail can wag, as we've seen so many times in this format of the game, and you know, crucial runs, which considering that we saw it took the Netherlands right to 8 balls to spare in order to get the job done. It was good that Logan could come in and do the damage and clean up the tail so successfully, something they're going to need moving forward in the competition. But I want to touch back on the batting of the captain, Rohit Paudel. 35 of 37, he was the true anchor of the innings. And 70 or 80. And especially if the pitch is not offering you anything. So at that Exactly. time you have to, as a batter, you have to be just there and craft your inning. Absolutely. And make sure, yeah, you have that curve, that right, you know, target set for the other team. Yeah, definitely. And as I said, you know, if he had, you know, either your number 5 or 6 batter, just stay with him for 5-7 overs to create a wee partnership, which could then allow the momentum shift in the innings. You know, they could have got to that 120, 130 mark, which could have ended up being quite a tough chase for the Netherlands batters. And Eunice, he's only 21 years old as a captain in a World Cup. I mean, the pressure that the young man must be feeling. He'll rue dropping that catch at the end of Max O'Dowd, but you know, what a performance from him to come in with the bat and to put forward, you know, such a good score on a tricky wicket. Yeah, and especially, you know, as a youngster, when you lead your team in the big stage, it's always a proud moment for you. And when you perform in these kind of condition and situation, so it's look like you become a star player. So I think they have the potential, and especially, you know, we are talking about these kind of teams, what they gain from these kind of situation and these kind of the big stage. So that is the key. So if they learn, if they gain that experience from this moment, from this stage, they will become a star player for their country. Indeed, star players तो बहुत निकलेंगे. हमने अभी जितनी भी एसोसिएट टीम्स देखी हैं जो नहीं भी जीते मैचेस, लेकिन उनमें से कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हमें ऑलरेडी नजर आए हैं और वो हमें आगे भी वर्ल्ड कप में नजर आएंगे, परफॉर्म करते हुए और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऑफ कोर्स उनका पार्ट रोहा, एक बात हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो T20 क्रिकेट है ना,
ये आपको अलाउ करती है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो ये एक अच्छी बात है कि एसोसिएट टीम से बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप नीदरलैंड को हम एसोसिएट टीम नहीं कह सकते क्योंकि रेगुलर खेल रही है, और बिग टीम्स को जो है ना वो कहीं ना कहीं सिर्फ T20 में नहीं बल्कि अगर हम एक और फॉर्मेट में जाए 50 ओवर की क्रिकेट की बात करें तो वहाँ भी ये चैलेंज करती है। और हमने देखा PNG ने क्या किया, हमने आज इवन यहाँ तक देख लिया कि स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को बैकफुट पे रखा हुआ था, और इंग्लैंड जैसी टीम ये सोच रही है कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, और स्कॉटलैंड उस माइंडसेट से आ रही है कि हम जाएंगे, हम टॉस जीतेंगे और कोई भी कंडीशन हो। और सब ने ये कहा कि बारबाडोस की पिच जो है उसमें अनइवन है, बहुत कुछ हो सकता है और बारिश भी आनी है, लेकिन उन्होंने अपना जो थॉट्स हैं वो क्लियर रखे, अपना माइंड क्लियर रखा और वो बेसिक्स पे रहे। तो एंड में कुछ भी कर लें क्रिकेट, चाहे वो T20 की क्रिकेट है, चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट है या इवन टेस्ट क्रिकेट है, इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स एज वेल। सो जिसके बेसिक्स अच्छे हैं, जिसके थॉट्स अच्छे हैं, जो क्लियर माइंड से जाते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो हमने ये देखा और आज भी यही हुआ। तो मेरे ख्याल से अपने आप को एक अच्छा वो दें। इसी माइंडसेट के ऊपर ही मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब आपको पता है एज अ टीम, अब मैं नेपाल की अगर बात करूँ, यू डोंट हैव इनफ रन्स ऑन द बोर्ड, ऐसे में माइंडसेट क्या होता है बॉलर्स का जब सामने एक ऐसी टीम है जो कि स्ट्रांग भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, 109 डिफेंड करने के लिए कैप्टन क्या बताएगा बॉलर्स को? एज अ कैप्टन आप क्या डायरेक्शन देंगे? बिकॉज अगर हम देखें नेपाल के बॉलर्स ने उस तरह से ना उनके फील्डर्स ने उनको वो सपोर्ट दिया जो नेदरलैंड्स को मिला, और बॉलर्स ने भी जो है चांसेस क्रिएट नहीं किए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होना, जैसे हमने बात करते हैं ना कि ऑनरशिप लेनी है। तो मेरे ख्याल से देखिए कैप्टन तो आपको सिर्फ बूस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन ये फिर ऐसे टाइम पे टीम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे आएँ और परफॉर्म करें, और कैप्टन सिर्फ आपको मोटिवेट ही कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर्स को अपना बहुत ज़्यादा इनपुट देना होता है। तो मेरे ख्याल से अगर जैसे फील्डिंग की बात कर रहे हैं, देखो फील्डिंग एक ऐसा एरिया है जो कि हम आपको नहीं, ये खुद ही अपने आप ने करना है। और जैसे आपने देखा कि अगर हम यहाँ पे नीदरलैंड की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, तो 2-3 कैचेस ऐसे हुए कि अगर वो मिस होते तो वहाँ 2-2 3-3 रन कहीं ना कहीं मिल सकते थे। तो अगर 106 रन का टारगेट सेट किया उन्होंने और वहाँ पे 10 रन और होते तो 120 रन तो पहुँच गए थे। तो मेरे ख्याल से देखिए यही वो इम्पोर्टेंस है कि आपको फील्डिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और ख़ुद से एफर्ट करनी है। और फिर जब छोटा टारगेट हो आपके पास तो क्या करना है, फिर आप 1-2 तरीके हैं, या तो आपके पास इतनी कोई एक्सक्लूसिव बॉलिंग हो कि आप फिर आखिरी ओवर तक ले जाओ, या फिर अपनी फील्डिंग से और अपने थॉट से इसको आप मुश्किल बना दो अपनी टीम के लिए। बिल्कुल हफीज़, यहीं पे आपका भी मैं लेना चाहूँगी ओपिनियन कि ठीक है रन्स कम थे लेकिन बॉलर्स ने भी वो एफर्ट शायद नहीं डाला। नेदरलैंड्स की अगर हम विकेट्स भी देख लें एक दफ़ा कि क्या नेपाल के बॉलर्स बेहतर कर सकते थे, डिफरेंस इन एक्सपोजर बिटवीन द टू टीम्स एंड एक्सपीरियंस एंड इन द वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ एंड द एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट बीटिंग क्वालिटी टीम्स, आई थिंक that's been the key difference between। लेकिन रोहा ये देखें ये एक्सपीरियंस कब मिलेगा जब ऐसी टीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टीम बड़ी टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आईसीसी जितना अच्छा काम इन टीमों को वर्ल्ड कप में ला के एक प्रमोशन के तौर पर या इनको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि इनकी बायलैटरल सीरीज़ इनके जो है सिर्फ एसोसिएशन टीम्स के साथ ना खिलाया जाए, एसोसिएट मेंबर्स के साथ ना खिलाया जाए, इनको बड़े मेंबर्स जो नेशनल जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जो टेस्ट नेशन है, उनके साथ चाहे एक सीरीज साल में एक मिले लेकिन इनका एक्सपोजर जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो ये एक है, अगर इनको मिलेगा तो दे हैव अ टैलेंट। Yeah, well, this is how the game grows, the exposure on the biggest stage against the biggest teams. And I think, we can all say we've seen really wonderful matches to start this World Cup. Other than poor Uganda, probably you'd have to say every single one of the associate nations have stood up, grabbed this opportunity and put a really wonderful performance forward. So plenty of positive signs. And I think anyone will be writing Nepal off after that wonderful showing today. Roha. Can't say that for sure because the crowds were there for sure. I think my favorite part about tonight's game has been seeing how passionate those supporters were, at every boundary, even the singles, and they were cheering so loudly. I think that's what made such a difference for Nepal, because the result at the end of the day doesn't, of course it matters, but when you have that crowd support, it really sort of, Martin, pushes you to do better. Oh, absolutely. As you said before, it's like having another player out on the field, and I heard something on the commentary like there's 300,000 Nepalese living in the USA and 15,000 of those are in Texas. So I think they all showed up to the ground today. They were all there by the sounds of it. Yeah, and from what we heard on the TV, it was
they were just screaming and making so much noise, and a lot like the Pakistani crowds do here, just make so much noise and just make it such a great atmosphere to Absolute play in silence front of. when there was a boundary that didn't go their way. Absolutely. Like you could hear a pin drop, and I think I saw a couple of Netherlands supporters who were hiding in the second I think tier. they were families actually. Maybe not supporters, just families. But isn't that wonderful? And that's why cricket will work in the United States. We've got obviously all of the expats from all around the world and plenty of cricket-loving nations. It's an inbuilt crowd there, but it's not just about the fact that there were Nepalese people there. Like when we saw the Dallas game early on with USA and Canada, there were plenty of locals there who were just getting in and around our wonderful sport. And I mean, what's not to love? We've seen really entertaining games of cricket. I was just about to come to that. I'm going to throw it to the experts who've been in the US plenty of times. When you have toured the US and when you come across local Americans, are they confused about what cricket is? I mean, how do you explain it to them? Cricket hai kya? Well, I hardly went to US for the cricket, to be honest. In my whole career, I never thought that I will go to US for the cricket. But in the last couple of years, the promotion of cricket in US is really high. ICC, given that some of the leagues, NOCs to go like to be held in US. One was MLC, started from there, and then the US Masters. So the people in US now following cricket, so they know what cricket is all about. And with this World Cup, I'm sure they will get a more hype of it, and then definitely the more opportunities for the cricketers to go out there and give their exposures. Like when they will go there, they will play. Obviously, the local talent will emerge as a better cricketer. And credit to the USA cricket counties who put forward some really stellar stadiums. Come out of nowhere for this World Cup. In such a short time. Yeah, and they're very impressive seeing what they did in that Dallas stadium. Marty, we were talking about that earlier. You could see how it used to be a baseball stadium and they've created a wonderful cricket stadium. So well done. Spectacular to see the development. We can't wait to see where cricket goes in the USA after this World Cup. यहाँ पे एक छोटी सी break लेंगे, but when we come back, the all-important washed-out game between England and Scotland, we will take a little brief look at it. कहीं में जाएगा. We will be back on Vantage Holding. A very warm welcome back to Vantage Holding presents Game On. Hey, and if you're still with us, thank you so much. We know it's the very early hours of the morning, but we still have to touch on the fact that the defending champions England, they were playing their first game today against Scotland. And can you believe it? These two sides had never met before, ever, in a T20I. And well, after Richie Berrington won the toss and elected to bat first, of course, the Scottish captain there, Joss Buttler, said, "That's okay, I wanted to bowl first anyway." Mother Nature would not let us get a game. It was such a frustrating day. I feel for the groundsmen. They were off and on. Those covers were literally like windscreen wipers. They were going that often. But in the end, the game was canned after just 10 overs from Scotland. We tried, Marty, to get a 10-over-a-side game, but frustratingly, it wasn't meant to be. We'd like to relive a few games with the English batsmen. So I would have loved to see how the game played out. I predicted a Scotland win. It could have happened with that. You just never know. A shortened game like that, a couple of early wickets, and the pressure goes on, and it could have been a completely different story. Hafiz, you played T10, 109 on that wicket. Doable? Not really. You never know. Because as Martin said, once you are chasing 110 on a tricky pitch, it can challenge you. It can challenge your technique, your temperament. But still, obviously, the rain won today. So it's better not to discuss too much on that. But we would have loved to see how England would have approached that, because of course it's all in the mind as well, and we've seen Scotland getting ahead of whatever kind of pressure they might have been in. हमने बार-बार ये बात की है कि intent कितना ज़रूरी है. उनके openers ने आज वो intent दिखाया. फिर of course rain interruption के बाद जब वो आखिरी 2 overs के लिए आए, खाली 18 runs add हो सके, तो शायद वो addition नहीं हो सका उनकी तरफ से. But जो intent उन्होंने पहले 6-7 overs में establish किया था उनके openers ने, would have loved to see where they could have gone if we had a full 20 overs game. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले 6 ओवर खेले और एक मोमेंटम सेट कर दिया, एक बेस दे दी, वहाँ से जो दोनों खेल भी रहे थे और वो अंडर प्रेशर आ गई थी बॉलिंग इंग्लैंड की. तो मुझे ये लगता है कि अगर ये पूरा अगर मैच होता
तो शायद जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो गलत साबित होती। तो हम सबकी प्रिडिक्शन में 135, 140, आई थिंक यू वाज 135, सो यू 130 के अराउंड थी मैं भी। तो हम 145 तक वो सारे रुक गए थे। ये मैच शायद 170 तक जाता, वही जिस तरीके के जब बारिश हुई तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर उस वक्त था स्कॉटलैंड का वो 162 दिखा रहा था। तो अगर ये 170 इस ट्रैक पे करते तो दे कैन चैलेंज, क्योंकि इनके पास स्पिन भी थी, इनके पास फास्ट बॉलर भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये मैच पूरा होता तो शायद इसका ज़्यादा एक्साइटमेंट आती। बिल्कुल एक्साइटमेंट जरूर आती। यूनुस नहीं हो सकी मैच कंप्लीट। ऐसे ही देखिए, अगर मैं उनकी बॉलिंग देखूं तो इसमें अगर दोनों टीमों में देख रहे तो इंग्लैंड अंडर प्रेशर नजर आई है, क्योंकि टॉस जीत के जिस तरह स्कॉटलैंड ने स्ट्रेट अवे उनके थॉट्स क्लियर थे, उनके प्लान्स क्लियर थे, और उन्होंने जिस तरह डिलीवर किया पहले फर्स्ट 10 ओवर्स में, जो कि 10 ओवर्स के गेम हुआ, तो उसमें ओवर क्लियर थे कि टॉस जीतेंगे, बैटिंग करेंगे, और कुछ ऐसा कुछ करने का है नहीं कि उसमें पिच में क्या है, कंडीशंस में क्या है, बारिश बाद में आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर जैसे हम बात करें, अगर ये पूरा मैच होता और जो 200 का जो मार्क था वो नज़र आ रहा था हमें, और क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्पिनर्स को खेला, और दोनों बैटर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी उनकी तरफ से ये स्ट्रेटजी बहुत क्लियर थी कि वो जहां उनको बॉल मिलता था वो उनके माइंड में क्लियर था, वो बाउंड्रीज़ की तरफ जा रहे थे और साथ में जो स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे। तो जब ऐसी टीम होती है जिसके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होती है, तो वो डेंजरस होती है। और इस पिच पे अगर हमने देखा, जैसे स्पिनर्स आए तो थोड़ा अनइवन बॉल हुआ है, पिच अनइवन शो की है, लेकिन जब फास्ट बॉलर्स आए, आर्चर की बात कर रहे हैं, वुड की बात कर रहे हैं, तो बॉल बैड में आया है। अगर हम स्कॉटलैंड की बॉलर्स की बात करें तो उनके पास मीडियम पेसर वहाँ मौजूद है, तो ये ट्रिकी होता चेस करने के लिए, क्योंकि इस पिच पे जो इंग्लैंड के बैटर्स थे वो भी चाहते कि पेस उनको मिलता। तो अगर 170 का मार्क ही वो चेस कर रहे होते और फील्डिंग अच्छी होती, कैप्टनसी अच्छी होती और प्रेशर ऑब्जर्व करते, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा मैच होता। लेकिन चले, जैसे बारिश को हम रोक नहीं सकते, लेकिन मुझे इस मैच में इंग्लैंड अंडर प्रेशर नजर आई है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर इंग्लैंड टू हैव टू हैव टू शेयर दैट पॉइंट, बट they're used to that, aren't they? Well, they are, but it really blows Group B out of the water now. If we have a little look, Australia, Scotland, Oman, Namibia, England. Namibia is now sitting top with 2 points, and if Australia or England loses a game and Namibia gets a washout or gets a win against, Oman and Scotland as well, it's like everything could change. This could have massive ramifications in terms of who makes the Super 8. So a lot of food for thought there. And fingers Scotland, crossed. yeah, you never know what could happen. That's the beauty of the World Cup. But it's prize time now. Of course, our Junaid Jamshed perfume winner, who answered the question correctly. Let's say a very big congratulations. Yeah, drum roll. Come on. Good girl. Come on, boys. What is this? What is this? Late to the party. Pathetic. Everyone's exhausted. Congratulations, Mohammed Aham. You have won your J-Dot fragrance today. Thank you for answering that question correctly, which of course was who was the coach of the Pakistan cricket team during Yunus Khan's 2009 ICC T20 World Cup. Congratulations. मोहम्मद अरहम, आपको बहुत मुबारक हो, सही जवाब का इंतखाब किया। We'll be sending you this with love. बहुत मुश्किल Congratulations. मैंने भी हिंट भी दे दी, सही इंतखाब किया जवाब का, but thank you. It was a tough question. Very, very, very tough question. I tell you what, the action keeps rolling on here at the T20 World Cup for 2024 because India play their first match of the season tomorrow up against Ireland. Big contest there. Ireland, we know that they can cause an upset. What can they do against the might of India tomorrow? Tune in later on today, Pakistan time, to find out. That's all we have time for now, though. On Advantage Holding presents Game On. Hey, guys, we all need an absolute break because this T20 World Cup is just hotting up and the action just keeps getting better and better. Roha, wonderful work as always. Gentlemen, thank you very much. Beautiful insight as always. To all of you who stuck around with us, thank you so much for your company, and we'll see you later on today. Of course, we'll be live from 5:30 p.m. local time. See you then.